दोस्तों, आज हम भरत बाला के घर में हैं। भरत बाला ने एक ज़माने में वंदे मातरम को हमारे लिए नया बना दिया था। भरत बाला ने ही राष्ट्रगान को भी हमारे लिए नया बना दिया था। उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को छुआ है और उनमें से कईयों के बारे में हमें पता भी नहीं कब। आज हम उनके घर में हैं, आज हम उनसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत उनको जानने की कोशिश करेंगे। आज हम भरत बाला के साथ हैं। मैं चाहता तो ये था कि मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि भरत बाला कौन है। उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो अगला वाक्य ये बताना पड़ता है कि ये वो हैं जिन्होंने ए.आर.रहमान के साथ वंदे मातरम वाला वीडियो बनाया था। फिर दूसरी बातें बतानी होती है। अभी भी हम एक ऐसा देश नहीं बन पाए हैं जहाँ पे हमें ये नहीं बताने पड़ता कि भरत बाला कौन है। आज मैं उनके साथ हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ हूँ। शुक्रिया। गुड टू मीट यू सर। आपने अच्छा किया जो हमें समय दे दिया। और ये वो टाइम है जब हम देश में तिरंगा लहरा रहे हैं और अभी 15 अगस्त आने वाला है। ये वीडियो जब जाएगा तो शायद 15 अगस्त होगा उस दिन। तो मैं जब याद करता हूँ तो 97 में वो वीडियो हमने आपका देखा होगा। मेरी उम्र 22 साल रही होगी। उसने कुछ किया था सबके दिल में, पूरे देश के लिए कुछ किया था, कुछ तो कनेक्शन बनाया था जो मिसिंग था। शायद वो वक्त भी कुछ ऐसा ही था ना 90s का, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। कहाँ से आया आपको ये सब आइडिया? आप तो एडवर्टाइजिंग में थे। मैं तो एडवर्टाइजिंग में था और आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल एट दैट टाइम मेकिंग कमर्शियल्स फॉर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इवन मल्टीनेशनल्स अ लॉट। बट मेरा बचपन दिल्ली में हुआ एंड मेरे माय फादर वाज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सो ये जो गांधीयन फिलॉसफी है वो घर से जुड़ा हुआ था। सो जब 97 में मैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स करता था एंड तो एक दिन मेरे पिताजी जो गांधीयन थे, खादी पहने हुए थे, घर में एक कोने में बैठे थे, उन्होंने बोला सन कम एंड सिट डाउन फॉर अ मोमेंट। सो उन्होंने कहा यू क्रिएट बिग आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स, जैसे टायर हो या पेप्सी हो या जो भी हो। यू क्रिएट एन आइडिया एंड यू क्रिएट एन एम्पैथी, जो कस्टमर कंज्यूमर दे बाई इनटू दैट इमोशन। And उस जमाने में anything India was not cool. Oh, 96, 97. This first thing about Levi's, Pepsi, MTV. So the whole generation was very different. तो उन्होंने मेरे को बोला कि can you create a big idea for India? Can you create an emotion that young Indians have a new fervor for this country? And बताते बताते उन्होंने वंदे मातरम गीत के बारे में बताया और he showed me his legs and see these marks, we'll get beaten up जब हम गाते थे। तो उन्होंने कहा वंदे मातरम का महत्व फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही था, इतना बड़ा असर था उसका। बट अभी वो 50 साल तक हो गए थे। So he said, can you find a new meaning, a new fervor, a new purpose for the young minds? ऐसे एक इतना वास्ट ब्रीफ दे दिया उन्होंने, एक गांधीयन का ब्रीफ। हाँ, एक ब्रीफ एंड समथिंग दैट वेरी मोमेंट कि आई गॉट अ क्रिएटिव कॉलिंग कि इसमें कुछ हम इन योर इमेजिनेशन यू गॉट टू बिल्ड अ बिग आइडिया। एवरी क्लाइंट कम्स एंड सेज आई वांट अ बिग आइडिया फॉर माय प्रोडक्ट। And here my father says, can you create a big idea for a nation? So I was at a very good pace, at good peak था मेरा advertising का। That day, I and my wife Kanika decided that we will stop doing advertising. We will dedicate for creating a new idea. हम एक middle class family से आते हैं, okay? And all of this are our own, whatever we create is our own business. तो हमने अपने जो पहले 7-8 साल की जो कमाई थी एडवर्टाइजिंग की, वो पूरा हमने डाल दिया, डेडिकेट कर दिया। ये सवाल मैं पूछने वाला था, बिकॉज आइडिया तो पापा ने बहुत बड़ा दे दिया लेकिन वो जो वीडियो आपने बनाया ना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, बट वो सब कैसे हुआ? सर वीडियो बहुत बाद में आता है। पहले इस सोच को कैसे कैनवस में उतारे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है चलो आप जाके एक पिक्चर बनाओ, समझ जाते हैं लोग, भी जानते हैं क्या प्रोडक्ट है, कैसे आने वाला है।
चलो एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ, लोग जानते हैं, चलो एक गाना बनाओ, एक म्यूजिक वीडियो बनाओ, ऑल ऑफ दैट is a creation and a product. But when you want to create an idea and an emotion, it has to be many things. तो पहला थैंकफुली ये जो एडवर्टाइजिंग की लर्निंग थी ना, उसको मैंने पूरा अपने देश के लिए अप्लाई किया. फर्स्ट थिंग आई वेंट एंड डिड इज दैट मैंने उसी रात को मैंने एक आर्टिस्ट है, सो आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द लुक and that feel and that fervor and the passion in the flag. So I went and briefed Tota Tarani, who is a very famous painter in south of India. Jo, however my father inspired, I tried my level best to inspire him. And then next morning at 6 a.m. he gave me a call and said, come over. So पूरा दिन रात को बैठ के एक 6 फुट की फ्लैग उन्होंने ये पेंट करवा दिया. ओके, नाउ इसको लिया मैं, तो मेरे बचपन के दोस्त रहमान, ओके, वी आर स्कूलमेट्स, वी आर फ्रेंड्स. You were in Delhi. No, नहीं. पहला initial days of school. Okay. Then from 8th standard I'm in Chennai, Madras. Okay. So there, I did my from 8th standard to college was in Madras. Okay. So he was my junior, so we became, we knew each other very well in school. And I started doing advertising work with him. उन्होंने बहुत सारे मेरे लिए almost like 70-80 commercials. He has done music for me before he did Roja. Great. Yeah. Okay. So then मैंने इसको ये पेंटिंग को उनसे लिया और इसको स्कैन किया, and I made it into this gel box like this, exactly like this. Okay. And I took this to Rahman and I said, see, आपने तो अभी तक सब फीचर फिल्म ही किए हैं, साउंड ट्रैक्स. Let's make this your first album and let's create Vande Mataram. ये ऐसे बना के ले गए थे आप? Yes, this I showed him. Okay. Now, Rahman and I have been talking about doing something, but it was not Vande Mataram. We just said, like, we met in Mumbai prior to that and said, we were inspired by the song of All I Wanna Say Is They Don't Really Care About Us. वो माइकल जैक्सन का एक गाना था. But actually एक सच बता रहा हूँ, Rahman and I did a song for Tamil, Pride of Tamil. Okay, that song he utilized it in Roja. Before Vande Mataram and all, Rahman and I worked on saying कुछ तमिल के लिए करते हैं spontaneously, किसी ने नहीं मांगा, हमने कहा. So he had done the song Tamila Tamila. फिर मणिरत्नम जी आ गए, रोजा आ गया, it sat very well. गाना वहां पहुंच गया. So now I get the back story basically, क्योंकि जब मैं रोजा को अलग अलग लैंग्वेज में सुन रहा था ना, तो हिंदी में हो जाता था भारत हमको जान से प्यारा है, and when you go to Tamil it becomes Tamila Tamila. Nice. All right, so then so obviously he said, let's do something exciting. Yeah. And he gave time, he understood. He was one of the busiest young composers at that time, but he understood कि ये कुछ अलग सोचने वाला है. So Vande Mataram for me was just not an album. So we did an album, we did 6 songs in it. Then first thing, even before recording the first song or writing a lyrics, I went to London. उस जमाने में when you want to do high speed shots, photosonic में, for like Pepsi में अगर खोला तो fizz आता है high speed में, वो सब यहाँ पे फिल्म नहीं कर सकते थे. Those gears and were not available. So I used to go and film for advertising. So I went to London and got the Royal Flag Maker of London to make a big flag. And I went to a company called Oxford Scientific Films and I shot in 1,000 frames this flag, which then became, for me it's like advertising में कहते हैं उसको pack shot. जो end में एक product आता है उसको pack shot कहते हैं. Your pack shot has to really look sexy and beautiful. For me, I want people when they see that flag to drool over it, to see the sea of wave in it.
So I went and filmed it 1,000 frames. सोच ये थी कि whether it's in advertising, you will go for the client and get the best. Yeah. When you're doing it for India, we will get the very best. हाँ, मतलब प्रोजेक्ट में जितना पैसा मिला वैसी सोच से नहीं काम नहीं नहीं, पैसे सोचा ही नहीं. हाँ. What is the best for the idea? Get the best talent for every piece of that idea. So I can see that, like जैसे पहले आप उनके पास गए ये पेंट कराने के लिए, उसके बाद आप रहमान के पास गए, फिर आप लंदन गए, तो ये था कि बेस्ट ही करना है इसमें सब कुछ. और Gana, like say, while we were producing it, for the very first time, Rahman, he has a comfort zone. He works with great musicians over here, and he has a fantastic studio. But we said, no, we should get this sound, which the world loves it. So we went to London for recording. We recorded with lots of musicians in London. We mixed it in London. So we thought like, अगर हमको finally जब sound play back करते हैं, and we both are really Michael Jackson fan, and he's a really so we play a Michael Jackson song like Black or White, or All I Want to Say Is They Don't Really Care About Us, and immediately in the same setup we will play Tujhe, Salaam and see whether it gets the same sound, same kick. I'm talking about musical, sound engineering quality, technically the very best for the song. And that we did. So the thing is, we were like Wonder Boys. And it was all जेब का पैसा. फिर क्या? Sir, वो ना, when you decide that you're going to do for something, we were doing for ourselves. We never did that we will do it for, there was no client. Yeah, there was no client. There was no client. Yeah. You are your own client. And it came right at the right moment actually, because 97 was 50 साल देश की आज़ादी के. There was this moment also, the sense of moment also in it. So I filmed it with a British cinematographer because I'm going to go to every remotest corner. In the villages, it'll be dusty, dirty, this and that. But I wanted to film and see the beauty in it, the emotion in it, and not the dirt, and the honesty in it. तो हम हर जगह गए. हमारा पहला चीज क्या था? हर फ्रेम में देखिए 97, 25 years ago, flag. We embrace. So अगर मैं गांव जाऊंगा, ओके, चाहे आप भुज में जाइए, पहले वहां से शूटिंग किया था, जाते ही हम एक पहला बड़ा झंडा गाड़ देंगे वहां पे. लोग विल कम ओवर एंड देन वी आर सेइंग वी आर डूइंग दिस फॉर इंडिया. आ जाएंगे पूरा दिन बैठ. हमारा एक्सपेंस उनके साथ क्या था? लोगों को पानी पिलाना, प्यास, because you have to wait in the heat and all that. सिर्फ प्यास. And then the flag worked magic everywhere. So you also took flag everywhere. Everywhere. In fact, if you look at the climax of the video, we made at that time the biggest flag ever on India. कहाँ लिया था? जोधपुर के बाहर एक डेजर्ट में, फ्लैट लैंड में. We had to put pile, foundation to put it because of the wind, and it was a 60 feet by 40 feet flag, or even bigger than that. So imagine to hold that, and we had 5,000 people underneath it. So एक kind of, it was like a march. हम गांव में जाके, आसपास के गांव में, जोधपुर में बोला कि सब लोग आ जाइए. लोग अपने कैमल में आ गए, बैलगाड़ी में आ गए, पैदल आ गए, and they saw ये बड़ा कुछ झंडे का मेला, and they saw the big flag. And वहां पे क्या हुआ हमको? So I had asked, because उस दिन हमारे, we don't have the resources, so I had requested the Ministry of Defense to give us the helicopter. हमने डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा था कि हमको एक शॉट लेना है, एंड दैट्स जोधपुर एज अ एयरफोर्स बेस. उस जमाने में दे डिनाइड दैट परमिशन, नॉट नोइंग क्या हो रहा है. बट फाइनली आई वेंट टू दैट एयरफोर्स बेस. लोग आ गए, ओके, हमारे पास सिर्फ 1-2 घंटा है. वी आस्क्ड दैट पर्सन, प्लीज गो अप एंड टेक अ लुक, एंड then you decide whether you want to deny this. The person there took this call, sent the helicopter and said, "Wahan ka nazariya kaise hai?" He said, "Sir,
It's a beautiful flag, and there are thousands of people. And he says, "You have it." And we went and got from the Mi-18 helicopter that big shot of the flag surrounding. So, एक चीज है सर, उस जमाने में अगर मैं कुछ भी सोचता था कि मेरे को आपसे मिलना है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप बड़े हो, पावरफुल हो, जो भी हो, आई विल गेट यू. देयर वाज नथिंग, एवरीथिंग वाज अनस्टॉपेबल उस आइडिया के लिए. वो एक एनर्जी था. Yes. First of all my teammates, I should say, within my company, they all came to work in advertising, and suddenly हम saying हम जाके वंदे मातरम कर रहे हैं. वंदे मातरम was not a cool thing at that point of time. So if कोई भी पूछेगा मेरे को advertising agency वाला क्या कर रहा है बाला, तो I'll say यार I'm working on an idea called वंदे मातरम. They said, are you crazy? People even suggested, why don't you do I Love India? अगर आई लव इंडिया करता तो आज will it be as magical, as emotional as Vande Mataram? I don't think so. There is something we always have to respect. Yeah. जो हमारी जो सालों से आ रही है उसमें कुछ है. You have to find a way to communicate that in a new way as times evolve. That is art, that is creativity. You can't change things. ये भी एक बड़ी बात है ना कि आपने कभी इसके लिए कोई स्लोगन नहीं किया, मतलब हमेशा आर्ट को जरिया बनाया. मतलब लोग देशभक्ति के लिए बहुत तरह से काम करते हैं, बहुतों का प्रेफर्ड मूड ये होता है कि वो एक नारा सोचते हैं. आपने कभी वो नहीं सोचा, आपने हमेशा आर्ट और एस्थेटिक्स पे बहुत भरोसा किया. सर आई एम अ फिल्म मेकर. मेरी सोच ही एक विजुअल इमेजरी है. अगर उस विजुअल इमेजरी में मैं एक सच्चाई को दिखा दूं एंड उसमें एक इमोशन दिखा दो, जो भी हो सर, लैंग्वेज क्या फर्क पड़ता है. अगर वो एक इनोसेंस, एक प्योरिटी आ गई ना, इट कनेक्ट्स. द वंदे मातरम सॉन्ग आई प्लेड इन मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. ओके, that's in America. America, how they take themselves for their patriotism. They were blown by this when they saw it at that time. Because they felt, I don't know the language, but I feel it. So, एक important चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब when we started, the first thing and only thing I told A.R. and everybody in our team that listen, it should be a timeless idea. हम जो भी करें, it shouldn't look dated 2 साल बाद. And we should compete with the very best of the mainstream. ये नहीं कि ये सोशल मैसेज है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग है या पेट्रियोटिज्म है. वी डोंट नीड ऑल दैट हेल्प. ये आइडिया है. इट हैज टू फाइट एज एन आइडिया. इट हैज टू फाइट इन इट्स ओन क्रिएटिविटी एंड इट हैज टू compete with the very best. अगर आप उसको उस जमाने में MTV में डालो, it should be number 1 for 12 weeks with competing with the best of the songs at that time. Yes. वही हुआ. वो हुआ. आपको पता ही था कि होगा? नहीं सर, समवेयर एक इमोशन था कि ये अब मेरे हाथ से निकल गया, ये कुछ बड़ी सोच हो गई है. वो हमको एक फीलिंग था. लेकिन जबरदस्त रिस्पॉन्स था. लाइक हाँ, एक याद हुआ मेरे को. So my father, very simple people. We should get back to your father in this story. अब आइडिया एग्जीक्यूट हो गया है. हाँ, देखा उन्होंने. हाँ, तो क्या हुआ 97 में उस दिन 14th August midnight we did a live concert with Rahman at Vijay Chowk in front of all the present past 7 prime ministers. The entire everybody was there. Took the Vijay Chowk and they had some event and the climax of the event was Vande Mataram song. And उस जमाने में LED screen नहीं था, video projection था. तो कुछ 50 video projections were there on either side of Rajpath. And people were dancing. Loop में जा रहा था ये गाना. ठीक है. Next day early morning, I took वो जो सबसे बड़ा flag है ना, उससे जरा छोटा वाला भी बनाया था. I took it, landed up in Madras. My parents were inside
quietly, myself, my brother and my wife, everybody, entire building, it's a 3-story building, एक घर है, उसको पूरा झंडा से रैप कर दिया. My God, you have that picture somewhere? Yes, Oh, I can show it to you. great. And I got my father out and said, I want to take a picture of you. That's all. The man was shy. He said, I will not do all this. You did it. But interestingly, a lot of journalists reached out to him, but he never spoke. But finally, India Today I think they reached out. So they wrote in the article featuring the song, saying, the song is Ma Tujhe Salaam, but actually it is Appa Tujhe Salaam. Yes. So, I felt good that my father felt good. But nothing comes easy. Nothing comes easy. You will have impediments everywhere. Yeah. So, I went to, at that time, at the end of the day, I'm also running out of cash. But we got, the product started taking shape. अच्छा, मैं ये बहुत कुछ किया तो मैं भूल जाता हूँ. ये माँ तुझे सलाम वीडियो किया था. Then we made 200 1-minute films on India. Because लोग डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे. आजकल जो रील बोल रहे हैं ना, वो रील हमने उस जमाने में किया था. 1-1 मिनट की 200 फिल्में. Stories of people. And it'll always end with माँ तुझे सलाम. And that वो जो फ्लैग निकाला था ना लंदन में, उसके साथ. And it came on every satellite network and every दूरदर्शन चैनल. और National, इसमें आम लोग होते थे हर 1 मिनट में. eminent people to आम जनता. छोटे छोटे stories. Greatest maestros to a common man. Now that started, basically हमने 100 days, see finally एडवर्टाइजिंग से एक सोच आती है, उस सोच को इंप्लीमेंट करना है. मीडिया प्लानिंग स्ट्रैटेजी वाज क्रिटिकल एंड आई वांटेड टू डू कारपेट बॉम्बिंग. सो वी हैड माँ तुझे सलाम वीडियो एट वन एंड एंड वी हैड दिस 200 1-minute films in all languages. Okay, we had a robust team of young people, sir. We went and filmed. आप आए हो ना आपके टीम के साथ आज. वैसे हमारे पास एक 400 स्क्वायर फीट ऑफिस था पेडर रोड में. उसी में से सब कुछ ये किया एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू बी सीन फ्रॉम ओरिया टू असम टू कश्मीर टू राजस्थान टू एवरीवेयर. सो दूरदर्शन बिकेम अ पार्टनर फॉर अस एट दैट टाइम बिकॉज गवर्नमेंट एट दैट टाइम स्पेंट 100 crores to make content, but they didn't find that I am credible enough to get some of the grant to make content at that time. Finally, the head of Prasar Bharati or Doordarshan saw my work and said, "Haath jod ke, you please give it to us. We will find ways to monetize it for you." So, I went to all the great Indian brands, traditional valued brands, but they asked me what is in it for me. I couldn't answer. I thought everything is in it for them. Finally, Colgate came on board. So every film will end with Colgate keeps India smiling. Okay. Now it started coming in every channel. Parliament में हंगामा हो गया. They asked, why should a multinational support Vande Mataram? I remember that episode. Yeah. So फिर finally they asked me to back out of Colgate and go to, they said they will provide me a public sector company. I said, no, I have a irrevocable contract. They partnered with us without asking anything. So ho gaya, finally there was a joint parliamentary committee where we had to go and face. So I went with my jeans and white shirt like that, cool like a young dude, and took a big monitor and a high band deck in those days. And andar jate there were so many eminent members of the parliament from Bengal. They said, what do you know about Vande Mataram? And there was Surjit Singh Barnala, Kanchi Ram, Pramod Mahajan, Sushma Swaraj, everybody were there. मैंने कहा, please give me 20 minutes. I will take you through a journey. And I did this for my father. I emphasize that. And I played
that video of Ma Tujhe Salaam to many of these short films, including they saw Arafat saying Vande Mataram, Gorbachev saying Vande Mataram, Nelson Mandela saying Vande Mataram. So Sushma Swaraj stopped the tape in between when I was almost there. She said, God bless you, my child. हम सुबह उठ के क्या इस्तेमाल करते हैं? She looked at all the other members. कॉल बेटी तो इस्तेमाल करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है हमारा? आप बनाए. God bless you, child. And that's it. Solved it. Solved. So I'm just saying, I see when your idea is there, you stand tall. This seems like very practical. No? Have no fear. One thing, when you're proud of your idea, have no fear. Yeah. And that will give you to the best, bring out the best of your creativity. So JPC को बस फिल्म दिखाया और solve. Disappeared JPC. Because it is the persons and people from their constituencies already in the film. Yes. They are not there. We went to the people. Yes. But one thing, sir, when the Power of idea, art and साथ में लोगों की ताकत भी तो है ना. सही बात, सही बात. इतने सारे लोग आपने जोड़ लिए थे ना इसको बनाते बनाते ही. जैसे आप जोधपुर का बता रहे हो, इतने 1000 लोग आ गए और आप ऊपर तक गए, कश्मीर तक गए, वहां पे भी शूट किया, सब जगह किया. तो एक बड़ी जनसंख्या भी तो आपके साथ आई ना. तो सबको लग रहा होगा कि ये तो यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब इसमें कहाँ पंगा करें. जनसंख्या मेरे लिए नहीं आए, वो नहीं आई, आपको सोच आइडिया के लिए, सोच के लिए आई है. तो ये एक पार्ट है आपकी जिंदगी का जिसने शायद आपकी जिंदगी बदल दी. हम में से बहुतों की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा असर तो डाला ही है इसने. बट देन मेरे ख्याल से आपने एक बार फिर वंदे मातरम किया, इस बार लता जी के साथ किया. देन यू डिड जन गण मन. तो वो भी कहानियां बताइए ना. लाइक पहले वंदे मातरम पार्ट 2 करते हैं, वो कैसे हुआ? लता जी ने आपको कैसे बोला कि मुझे भी करना है? नहीं, पेडर रोड में मेरा ऑफिस था. एंड लता जी सिस्टर एंड नेफ्यू स्टेज right above my office. So दीदी ने पूछा ये रहमान वाला किसने किया? So they said I had done it. तो दीदी ने मेरे को और कनिका को बुलाया. So it was an honor to meet दीदी. And then she told me about her Hemant Das Vande Mataram which she did for Anand Math. Anand Math. Yeah, what a song. Yeah, what a song. Yeah. Vande Maa. So she said हम भी करें. एंड वो पुराने वाले में बहुत फास्ट बीट है ना. Absolutely. उस जमाने के हिसाब से बहुत ही फास्ट बीट है. So I took that itself when she asked me. I said, दीदी हम इसी को हम एक नए तरीके से लाएंगे. And she just blessed us and spent the time. We used to come for recording. कितना बारी भी बुलाओ. So she took us to her home in Kolhapur. Okay, and she just embraced us as their children. Wow. And till the very end, if I have a problem or anything, she was like a mother, guide, everything. बैठे बैठे ही हो गया मतलब है. इसमें ज्यादा नहीं करना पड़ा काम. And that was magical. Yeah. थैंक यू सो मच. एंड मुझे लगता है हमें ये बात कहनी चाहिए कि मुझे बहुत सारे लोगों को मतलब वी शुड थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन. और मतलब जिस जज्बे के साथ आपने किया है, बिकॉज ये काम कई तरीके से लोग करते हैं, पर आपने जिस जज्बे के साथ किया है, जिस कला के साथ किया है और जिस अप्रोच के साथ किया है ना कि मैं तो ये काम करूंगा और मैं इसको इतने बड़े ढंग से ही करूंगा, लोग अपने आप आएंगे साथ में और मैं इसको कला के साथ करूंगा, मैं इसको मीडियोकर नहीं बनाऊंगा, मैं इसको साधारण नहीं बनने दूंगा, मैं हर साधारण आदमी की कहानी भी एक बड़ी कहानी की तरह कहूंगा. तो मुझे लगता है कि पिछले 25 साल में ही सही पर इस पूरे दौर में जो ये जनरेशन है उसके लिए और ओवरऑल कंट्री के लिए आपने जो कुछ किया है उसके लिए मुझे लगता है मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ. मुझे आपने जिस तरह से अपने देश के साथ तिरंगे के साथ कनेक्ट किया है उसके लिए, क्योंकि क्या होता है ना जब बहुत सारी नॉइज होती है, बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है ना, तो लोग एक चीज का विरोध करते करते सही चीज का भी विरोध करने लगते हैं. मेरे पास तिरंगे का विरोध करने का कोई कारण नहीं होता है. एंड अगर वो नहीं होता है तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो कनेक्शन किसी और वजह से नहीं बना है, वो एक कहानी कहने से, वो एक कला से बना है और मैं उसको अपने ढंग से ओन कर सकता हूँ. तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे लगता है कि आपसे 5-6 घंटे की बात करनी चाहिए, मतलब 1-8 घंटे में ये होने वाले काम नहीं है. आज के लिए इतना ही और थैंक यू.